Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan Ali Jamali and welcome to another episode of From the Top Inspiring Conversation. आज हमारे साथ जी मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी. ज़ैनब अंसारी इज़ पाकिस्तान लीडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर, DI एक्सपर्ट और ये फाउंडर हैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी Empower Yourself की. So ज़ैनब, thank you so much for joining us. Yeah, thank you for having me. So I remember this idea of podcast I discussed initially I discussed this with you and we were supposed to do it together, but finally you are my guest here. No. I'm so happy that this is happening over here and this is so overdue. We really need these conversations to come out on LinkedIn. Excellent work. To be very honest, जब भी मैं डिजिटल स्पेस पे मेरी नज़र जाए, रील्स पे नज़र जाए, तो वो सब जो रील्स हैं इधर एंटरटेनमेंट और कॉमेडी और पॉलिटिकल कमेंट्री और इस तरह का कंटेंट अवेलेबल है जो कि मुझे लगता है कि इररिलेवेंट है फॉर द पीपल जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं लीडरशिप में, वर्क प्लेस में, वेलबींग में. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू प्रोड्यूस समथिंग रिलेटेड टू दैट. सो द बेसिक आइडिया फॉर दिस पॉडकास्ट इज़ कि हम लीडरशिप, वर्क प्लेस और वेलबींग के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप जैसे थॉट लीडर्स को बुलाएं और उनसे बात करें. Perfect. Yeah, absolutely. I agree with you as well. And the more minds you have together, the more information we'll have as an industry. True, so true. So Zainab, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि how did you end up becoming this DEI expert and corporate trainer? ये journey कहाँ से शुरू हुई? And how's your career journey? Well, I have a very unusual career journey because usually people train the trainer, do the certification, then come into this. I actually initially had no intention of coming into this, and I used to be a fashion designer. I was an entrepreneur my entire career, and one day I decided that I had had enough. There was a lot of violence and oppression I saw subjugated towards certain marginalized groups, जिसकी वजह से I started Empower Yourself, and that started in 2017. Usme we basically, it's a platform where we teach self-defense courses on 6 areas of self-defense: verbal, psychological, legal, financial, digital. And you can see how this connects very directly to diversity, equity and inclusion. So companies would call me, NGOs would call me, informal workspaces would call me and start, I would love to go and deliver a speech here or there. And then this company came to me, Emerge Forward के नाम से, and उनसे मेरी काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हुई थी. उन्होंने कहा था कि एक एंग्रो के लिए हम let's do a retreat, and we did the retreat and it was great and I had a great experience on my own. That's when I realized that team building I'm good at. I'm good at actually delivering a lot of courses, and because I talk about communication and power balances and leadership dynamics actually to marginalized groups so that they can improve themselves in the world, I realized that those are all the same aspects that really apply to the corporate world as well. Right. So वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद काम मिलना शुरू हुआ, connections होने शुरू हुई, and now I'm a corporate trainer, which is very unusual. And how's your day look like? Like आजकल जो I'm sure कि you are very busy, you are doing multiple programs और फिर आपके social work के जो काम हैं, community के लिए जो काम है, I'm sure कि वो भी आपका उसी के साथ चल रहा है. So like how does your day look like? It is chaos. It's utter chaos. It is. No matter how much you try to organize it, and especially Ramzan, I believe I'm not the only one. This is for everybody. Yeah. Everything goes completely chaotic. But March was mad. Mashallah, all of Pakistan stood up together in solidarity for women, for the International Women's Day. So we got very busy. Ramzan was chaotic, and I hope the rest of the year is going to be a little more organized on our side. But yeah, our day is just like that. It's either training, and training से पहले और बाद में it's meetings, connecting with people. I spend a lot of time gathering social capital, because मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरे सबसे बड़े opportunities आए as an entrepreneur, as a trainer, as somebody in social responsibility, it's come through my social capital only. So I spend a lot of time on that. Yeah, even I know that you're very good at relationship building, into networking as well. How's your Rotary जो Rotary के जो projects हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. Oh yeah, so I just about a couple of months ago we just decided to put a club together. We've all been in different Rotary clubs and we saw that we're natural problem solvers, all of us. Entrepreneurs हैं, वो तो एक natural तरीका होता है. So आपस में बातचीत करनी शुरू की थी कि how can we do this better. Then floods came.
बहुत सारे individuals मुझे मिले who were brilliant. Uh, some of them had connections, but they didn't have resources. Some of them had resources, they didn't have money. And I wanted to create a platform, eventually where if somebody who is honest, because that is a trait which I feel is it's become rare in our society. So when I find an honest person, hardworking person, I do want to help them. So this Rotary Club of Change Agents was to bring all these people together, take them out of their silos, give them a space to synergize and create projects that structurally change Pakistan. So our tagline is rebuild Pakistan. How can we rebuild Pakistan from the space where it is at? I believe that एक बंदा नहीं कर सकता है, multiple लोग मिलकर कर सकते हैं, and especially when you have powerful people together. Mashallah se we do have powerful people together in this group, and they're all working very hard individually in their own capacities, and when we come together we create magic. माशाल्लाह से कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी इतनी घुस के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेलिंग ये करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, एंड देन दे डू द स्ट्रेटजी अराउंड इट. सो आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है वंस यू आर इनसाइड द क्लब. सो या बीन वेरी सेलेक्टिव बट वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव. Wow, amazing. And then one of the project that you completely fell in love with, जिसका जब भी आप सोचते हैं you feel like proud, कोई ऐसा project would you like to share with us? Well, this is Empower Yourself. It changed my life because I started learning self-defense for myself as a martial artist. And then I slowly went from martial arts into communication strategy and understanding how powerful that was in terms of changing most disturbing situations. So there are a lot of communities that I work with. I've seen the girls completely change. They've started reporting crimes that have been committed towards them, and they feel more confident in being more independent with their own decision making. I'm genuinely proud of it because every day, every second day, अब तो 5 साल से कर रहे हैं. So every second day, I find somebody or the other, a past participant, somebody I worked with, a partner, anybody, and they talk about how this program has changed the way they thought, how it's changed them as people, how it's improved their relationships, in different areas of their lives, how it's improved their career prospects, which was never something I thought I would be able to help them in. So yeah, it makes me very happy that before I think leaving this world, we're able to do something इंसानियत के लिए. Wow, amazing, amazing. And then one more thing, even I'm witness for that कि जो आपका DI का content है, that is very deep, very practical, and also somewhere relevant to the current trends. So how did you come up with this unique blend of content which is like related to diversity and inclusion, and how's the response from the market on that? Well, since I didn't take any certifications, I did not have a formal guideline the way a lot of people do have, which is necessary. But because of my on-ground work in Empower Yourself, I have a very good understanding inside out of the rural, urban, and general society implications on marginalized groups, what they go through. I sit with those groups from different socio-economic classes, whether it's a top-tier company or it's, for example, a colony inside Karachi, or it's a village next to Mithi in Thar. So उन सब के साथ बैठ चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है. I've been able to figure out what the real problems are in our society. And I feel like DEI solutions जो बाहर से आते हैं ना पाकिस्तान में, they don't really take into account कि Pakistan is a very special, unique situation that they are in. We are in the bottom 4 in human development indexes around the world. Okay, and it doesn't mean कि हम लोग ख़राब हैं. It means that हम काम नहीं कर रहे उस direction में, right? And क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम information हमेशा hodgepodge तरीके से collect करते हैं. For me, getting all this information from a grassroots level was very important. So now when I sit inside a corporate, उनका एक क्रॉस सेक्शन होता है कॉर्पोरेट में. आपके प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, आपके लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी आते हैं. सो आप इन सब को जब डील करते हैं ना, यू कैन नॉट वाइट वॉश देम विद बाहर का कॉन्सेप्ट. Because of my understanding on the ground, I've been able to handle and pick out the exact problems that need to be addressed, and I only address those in my sessions. And जहाँ तक disability के ताल्लुक है, I come from a family where we do have people who are disabled, but
I don't know if the word disabled is right for them. I feel like they're highly enabled people because they're brilliant. Mashallah, so my cousins who all done amazing things in life. I've grown up with them. I've seen their struggles from a very young age to now. So I'm able to sensitize myself to people with disabilities a lot better than other people. I don't see them as, oh, ye koi ek alag makhluk hai, which people do see them as, which is weird. I see them as incredibly capable, brilliant human beings that they are. So this perspective, mindset, and personal experience has helped me shape up the trainings that I have today on DEI. Yeah, exactly. So even I'm sure कि वो जो आपके personal stories हैं, experience है, community में काम करने का जो आपका तजुर्बा है, that also is very much relevant for your corporate trainings as well. Oh yeah, it is. I never thought it would be, but it really helps me connect with the audience and gets the lesson through in a much deeper way than otherwise it would have been possible. Wow, amazing. And then last month, if I remember, March के महीने में I found you were very busy in multiple programs. Women empowerment पे बहुत अच्छा काम बहुत सारी organizations कर रही हैं. So how do you look at this movement of women empowerment in Pakistan? And even how do you look at it, for example, कि future में आने वाले कुछ सालों में उसका impact क्या आने वाला है? Well, हम सब ने ये देखा है पिछले 10 साल में the conversation around women has massively changed. With the cases coming into the media and then suddenly the whole country understanding what's going on. सबसे जो पहला step होता है ना problem को solve करने का is accepting there's a problem, right? पहले denial में चल रहा था पूरी कहानी. And then suddenly the country started getting sensitized to the issues that are on hand, and you can see people who were talking in a different way 10 years ago are very sensitized and they're standing in front for women empowerment, which is good. It's an evolution. Women empowerment around the world, अगर आप इसकी history देखें, असली जो history है, not जो modern history अभी दिखाया जाए 1800 से जो history है, it's evolved over time. The more sensitivity in entire society has, the easier it becomes for women to get out, to mobilize, to work. And I feel especially the last 3 years, there's been an aggressive shift towards it. 3 years, 5 years, and extensively 10 years. So there are companies who are doing incredible work on DEI, and I've had a wonderful experience of working with them. And they walk the talk. अगर उन्होंने कहा है कि हम ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं बिकॉज हमारा माइंडसेट ओपन है औरतों के बारे में, आप वो कल्चर और माइंडसेट एक एक एम्प्लॉय में आपको नज़र आता है उनके यहाँ. एंड एज अ वुमन it's wonderful to go into these environments and feel so safe. And inside spaces like Orangi Town, site area वगैरह उन्होंने अपने silos बनाए और amazing safe spaces बनाई हुई हैं, right? And that's how women will come out. I think these companies are greatly contributing to the economy in ways that we don't realize. क्योंकि 50% हमारी औरतें हैं ना पाकिस्तान में, अगर 50% की 50% काम कर रही होती है आज, तो इकोनॉमी इतने बुरे हाल में नहीं होती जितने आज बैठे हुए हैं. So great work that's happening, and I applaud every one of these companies, pharmas ho, FMCGs ho, banks ho, that are really doing good work. So even I agree with you because I started my career back in like 2013-14. तो तब जो DI पे काम हो रहा था, it was just उसको अगर मैं अभी कंपेयर करूँ, as you rightly mentioned, last 3 years especially, तो अब now it feels like कि वो religiously काम होने लगा है as compared to आज से 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें तो. And now even I am witness of companies जहाँ पे आज से 5 साल पहले तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस जगह पे कोई खातून भी काम कर सकती हैं. Now माशाल्लाह they have hired female employees as well, और वो leadership positions पे भी उन्हीं organizations में काम कर रही हैं. So yeah, as you rightly mentioned कि वो जो 50% population है हमारे पास, अगर ये भी हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल हमारी सोसाइटी के सॉल्व हो सकते हैं. ट्रू. या एंड ज़ैनब, इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं कि लीडरशिप का जो रोल है आज के डायनामिक्स में वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाने के लिए, अगर कोई लीडर ये पॉडकास्ट देख रहा हो और वो सोच रहा हो कि यार मुझे इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाना है, सो व्हाट आर दी मेजर 1, 2, 3 steps that you would recommend to them? Well, first of all, check your policies. It starts from that baseline.
and after the policies check your implementation and uske controls kya hai, implementation kya hai. These are the areas that are most important, the structure of actually bringing DEI into the market. फिर ये बाकी जो soft areas हैं, the training and the sensitivity and these things come later, but first start with the policy. The policy creates the culture and the mindset, and then secondly have a no nonsense culture. ओके, ये मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस की थी. अभी एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिनके साथ मैं काम करी थी, विच वॉज ट्रेडिशनली इंटायरली मेल. देव नेवर हैड वेमेन कम एंड वर्क, बट द न्यू ओनर ऑफ दैट कंपनी, ही वॉज, we were doing a project. I was asked to come in over there. So I walked into the factory and he had a lot of workers there who said, "Okay, there's a woman here. We're not going to work." We're used to hearing this from time to time in some companies, so it's not a very big deal. Yeah. I didn't take it seriously. I was like, "Ab ye hai, whatever problem it is, I'll just go and do it." I was so surprised that I found out the next day when I went that the owner went and fired the entire lot together in one go, and I went into a shock. Ye kis tarike se kya hai? He said ke if I allow them to say this right now, I want to hire women, I have to hire women. It is a requirement by my clients. Okay, and if I don't do it right now, they will continue to perpetuate this culture and make it uncomfortable for these women to walk in. So he understood that creating the environment was the first step, the policies, the infrastructure, all of that, and then add the people into the mix so that when they come in, they don't run away. आपकी भी ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है, रिक्रूटिंग का कॉस्ट होता है, वो सारा सैलरीज चले गए आपके हाथ से. सो आई थॉट दैट वाज इंटेलिजेंट. इनिशियली आई वाज अ लिटिल वरिड कि ये किस तरीके से किया, बट वो हार्ड लाइन अप्रोच से क्या होगा कि he intended to rehire those people back again, but he wanted them to know that this was not a joke. He will take them out. So sometimes initially in the beginning, having a hardline attitude that comes from the top down, that we will not allow an attitude, we will not allow any lax attitude around this. We want it implementation, we will have it. Wow. So yeah, I admire that. Amazing. Xenab, now coming back to another important aspect of this conversation is well-being, because I know that word is also very close to you. आपने well-being पे भी बहुत कुछ काम किया हुआ है. Why do you think well-being is so important? Why? I'm asking this question to every guest because on one hand we say कि जी businesses के लिए तो सबसे important चीज़ है result, और आसान अल्फाज में जी business पैसे कितने कमाता है. एंड ऑन दी अदर हैंड ये ट्रेनर आके बता रहे हैं कि जी ट्रस्ट होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. सो ये दोनों चीज़ें एक साथ किस तरह से चल सकती हैं? ओके, सो मैं एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट के ऊपर टच करना चाहती हूँ, वो है, एंड आई लूप बैक इनटू दिस सो यू सी हाउ इट कनेक्ट्स. आपकी एक लिम्बिक सिस्टम होती है, इट्स एट द बैक ऑफ योर ब्रेन. इसमें अमिगडाला है, एंड मेरे एनीबडी हु इज़ बीन टू माय डाइवर्सिटी क्लासेस नो दैट आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. आपका फियर एक रिएक्शन निकलता है, सो एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, पैनिक, ये सारे इधर से निकलती हैं. अब नाउ दिस इज़ अ प्रोसेस इन योर माइंड दैट इज़ देयर एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. कि एक सिचुएशन हुआ, आप इंस्टेंटली एड्रेनलिन रश होता है एंड यू किक इनटू एक्शन इमीडिएटली ना. सो इट्स अ very primal way of the way your brain is actually structured. Now the problem here is that when this part of your brain is overactive, it's not supposed to be overactive. It's only supposed to be used for a few minutes at a time. When it's overactive, when you're constantly experiencing fear, paranoia and all of these areas, so it breaks down your capability of एक्चुअली थिंकिंग बेटर, मेकिंग बेटर डिसीजंस. हमें पता है कि फेयर बेस्ड डिसीजंस हमेशा सबसे ख़राब डिसीजंस होती हैं. डिसीजन शुड बी टेकन इन अ प्लेस वेर यू कंफर्टेबल, यूर इन अ बेटर स्टेट ऑफ मेंटल वेल बीइंग. उसका न्यूरो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है, बिकॉज द लिम्बिक सिस्टम इज़ नॉट बिल्ट टू रन लॉन्गर देन दो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम. Okay, so what happens when you don't take care of it and you're constantly fearful? देन आपके हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं. जब हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, आपके स्टेमिना ख़त्म होता है, आपकी एनर्जी ख़त्म होती है, तो आप उतना काम कर नहीं सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है. इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट? एंड सो मोर एडवांस सोसाइटीज़ हमारे यहाँ माशाल्लाह से फियर बेस्ड सोसाइटी बहुत है. वी ऑल इन एवरी एरिया
in our lives. We're so fearful, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या होगा, वो ना करो, ये ना करो, सिर्फ ये careers लो ज़िंदगी में, नहीं तो लोग क्या, there's a constant fear in our head, right? So उसके वजह से we never jump out and do the best that we can do, right? Now we shift to the front part of your brain, which is the prefrontal cortex. This is where the best decision making comes in, the creative thinking comes in, a more holistic way of thinking comes in, and this is what your leadership requires. You know, you need to be able to think in a clear-headed, mindful way. जिस तरह आपने बोला था, ये mindfulness को मैं scientific तरीके से ही connect करना चाह रही थी कि where it comes from. When you use this part of your brain, automatically your whole body relaxes, you're healthier, you're better, you come up with better ideas. Okay, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इंगेज करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? स्टोरी, आर्ट, म्यूज़िक। ये 3 चीज़ों में आप देखें, सबसे जो बड़े डेवलप्ड नेशंस है दुनिया में, ये 3 एरियाज़ को रिस्पेक्ट करती है, और हम ये 3 चीज़ों को सबसे दबा के साइड पे करते हैं एज ए नेशन। स्टोरी, आर्ट, म्यूज़िक, ये ख़राब चीज़ है। These are things that can be used to improve the function of your prefrontal cortex. ओके, तो माइंडफुलनेस आपकी बढ़ जाती है, स्ट्रेस कम हो जाती है, आपकी वेल बीइंग बेहतर होती है, एज ए नेशन यूर हेल्थियर। डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट जस्ट हेल्थियर बिकॉज उनकी न्यूट्रिशन बेहतर हुई है वगैरह, इज बिकॉज दे आर यूजिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एज वेल consistently in comparison to just staying to the limbic system. So I hope it made sense to you. Yeah. But I just wanted to break down कि इसके पीछे साइंस क्या है. Perfect. Even I agree with what you said. Even हम storytelling जैसे इतने positive word को हमने sort of like एक demeaning बना दिया है. हम कहते हैं जी कहानियाँ मत बनाओ, right? है ना, वो जो हम कहते हैं कहानियाँ मत बनाओ, वो हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन में उसको लेकर जाते हैं. वरना अगर देखा जाए तो स्टोरी टेलिंग कितना पावरफुल टूल है क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, इवन ब्रांड्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए. इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज. बट यू आर वेरी राइट कि जो हमारे वेल बीइंग है दैट इज़ राइटली कनेक्टेड टू आवर रिजल्ट्स इन परफॉर्मेंस एज वेल. Amazing. Zainab, now coming back to the power of technology जिसमें आजकल हम जी रहे हैं. Robotics, machine learning, chat GPT, AI, even GPT 4, 5, ये सब जो हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं. पहले तो वुमेन के लिए इशू था कि जी सिर्फ और सिर्फ मैन के साथ आके कम्पीट करना है. अब तो उनके लिए इशू है कि मैन के साथ भी कम्पीट करना है और मशीन के साथ भी कम्पीट करना है. सो इन दिस रेस जहाँ पे हम सब दौड़ रहे हैं और डेफिनेटली मशीन हमसे तेज़ दौड़े जा रही है, इस सिचुएशन में हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर ऑफ वर्क प्लेस? एंड वो जो एक ट्रेडिशनल थॉट आ रही है सबके दिमाग में कि जी ये जो मशीन लर्निंग है इससे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी और जो है वो लोग बड़ा परेशान होंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक कि जी काम क्या करें. इस पे व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल बूम? वेल, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर, दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट दे हैड इन माइंड दैट आप कैपिटल इंटेंसिव अगर आप बनाएंगे अपना फैक्ट्रीज़ और ये प्लांट्स और ये मशीनरी और रोबोटिक्स आप ऐड करेंगे जो बहुत पहले से ऐड हो चुकी थी हमारे वर्क लाइक काम पे, it will replace people, and it did. But people are not realizing that it also it improved the standard of living of all the people in that society. A, B, it created new jobs, right? So I feel that as powerful as AI will ever be, humans are ashraf al-makhluqat. We will be ever evolving. We are adaptable as species, and we can figure our way around. We will create jobs around this entire information. आपको ऐसे ऐसे अजीब व गरीब किस्म के जॉब्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं ना, टाइटल्स. people will come up with a way to sell their craft. So I mean अभी right now I was watching yesterday के AI artist is a new thing. I'm an artist. I'm a traditional artist. I'm a painter. So मेरा जो when I started seeing this AI paintings, तो मैं भी थोड़ी देर परेशान हो गई थी कि यार मैंने जो इतने अर्थ से बैठ के अपना होन किया स्किल, ये कहाँ जाएगा, right? But AI art is another way of thinking. Why not? So it's all about how open-minded we are. और इवन अगर देखा जाए टेक्निकली तो फ़ायदा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द इन्वेंशन ऑफ दिस कैमरा. तो अगर देखा जाए तो कैमरा ने आके एक बंदे की जॉब ली है, विच इज़ लाइक जो चीज़ें जो है वो से पेंट करता था. बट देखें जॉब्स कितनों को मिली हैं. कैमरा बनाने वाले से लेकर वीडियो एडिटर तक पता नहीं कितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. इवन आई रिमेंबर दिस चैट GPT केम इन
एंड आई कैन सी फेसबुक हर बंदा चैट जीपीटी पढ़ा भी रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि चैट जीपीटी के आने से कितने लोगों का रोजगार खुल गया है कि जी वी नीड चैट जीपीटी एक्सपर्ट और वी नीड समन जो कि हमें चैट जीपीटी सिखाए. सो यार राइट के इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, एडाप्टेबल है, हम अपना काम जो है वो किसी भी तरीके से कर लेंगे. या ट्रू 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 so true. Other than one more thing I wanted to ask you is like someone like in her mid 20s जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, what would you suggest to her especially कि वो अपने करियर में किन चीज़ों का ख्याल रखें? ख्याल रखे या सीखें? या सीखे is a good word. सीखें? Yeah. Okay. I always tell girls that because this is a very big weakness of ours, हमने अपने verbal skills और communication skills औरतों के लड़कियों के डेवलप नहीं होते उतनी तेज़ी से जितने मर्दों के होते हैं. एंड मोस्टली बिकॉज क्योंकि आप लोग नाइट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, आपने यूर आउटसाइड, पब्लिक मोबिलिटी से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, राइट? आपकी कितनी एक्सपोजर हुई है दुनिया से. women unfortunately over here in Pakistan, is not everywhere in the world, घर पे रहते हुए आप वो बहुत सारी स्किल्स मिस आउट कर लेता है. आई टेल पीपल सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश करो. ये नहीं है सिर्फ कि मैं बस बात कर रही हूँ. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंड हाउ व्हाट पावर इज़, व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हाट इट फील्स लाइक, हाउ यू हार्नेस पावर, राइट? देयर इज अ होल पावर बैलेंस. इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड, फाइन ट्यून योर बॉडी लैंग्वेज, अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल्स बॉडी लैंग्वेज वर्क्स, अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स. ये सारे आते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के अंदर. तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी 100% सीखें. नंबर 2 थिंग, you'll see that again because of lack of exposure, the women lack this. I have seen women who are good at it though, very good at it. Strategy. Okay, whether it's understanding military strategy, whether it's understanding business strategy, studying how strategy works and how to cultivate a strategic mindset, that's very important for women. Number 3, whatever you earn, ladies, invest. फौरन इन्वेस्ट करें. हमें आदत नहीं है इनहेरिटेंस के कहती हूँ. प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है ना, ओनली 1.7% ऑफ द प्रॉपर्टी in all of Pakistan is owned by women, and that too 90% of them are owned through inheritance. यानी कि सेल्फ खुद वेल्थ बना के करना is not a thing that women do. This is a very big problem we have. इससे आपका पूरा पावर डायनामिक्स पूरे मुल्क की शिफ्ट हो सकती है if you just start investing, right? So ये कुछ चीज़ें I feel like they should. Oh my god, amazing, ज़बरदस्त, बेहतरीन. So now Xenab, coming back to another segment which is like leadership and lifelong lessons. तो माशाल्लाह पूरे करियर में, पूरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी ने आपको सिखाई हैं that you hold very close to yourself? Well, there's a cliche called your network is your net worth. And oh wow, it is so true. And we have a bit of an informal economy अगर देखा जाए. इतना वो well developed और implementation controls ही हमारे नहीं होते हैं. तो उसकी वजह से we rely on community. So networking is everything. When I started my first business, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर थी, तो सिर्फ मेरा प्रोडक्ट वॉज इनफ टू सेल एंड माई कस्टमर सर्विस, दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. बट आफ्टर आई लेफ्ट फैशन आई रियलाइज दैट मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी इज़ दैट मैंने अपनी नेटवर्किंग उस एक्सटेंट पे नहीं की थी जो मुझे करना चाहिए. और नाउ एवर सिंस आई डिड इट, स्टार्ट डूइंग इट, इट्स चेंज्ड माई लाइफ. इट गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज आई हैव नेवर थॉट ऑफ. You know, it's money is coming, mashallah say, and that comes from the network mostly. People I know, people who I'm friends with, people who bring work to me, you know, इस तरह करके मैं उनके साथ किस तरह उनकी मेरी relationship है. So relationships, networking, I think take precedence over everything else. Number 2, people, this is a conversation I'm having with a lot of people nowadays, कि honesty is a rare commodity in Pakistan nowadays. एंड शरीफ लोगों के लिए ज़िंदगी अज़ाब हुई भी होती है. आई थिंक इट्स नॉट ट्रू. आई थिंक इन द फर्स्ट 5 years 6 years of your career, honesty can put you into a lot of trouble. It can, it's true, it's happened to me. People will take advantage of you, things will happen, but eventually you learn. And if you stay honest and you stay clear in your path, your reputation will take you forward very far in life. So honesty, कितना भी मुश्किल लगे शुरू में, honesty, go for it. Do it. Be honest. Be transparent. Put it up front. It will help you for the rest of your life. So
प्रोफाउंड एंड आई मस्ट से कि वो जो हमारी टैगलाइन है इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन, जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आई एम श्योर के दे वुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम योर कन्वर्सेशन. या एंड देन वन मोर थिंग, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर माशाल्लाह लाइफ एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार फरहान अगर ये मैं 5-10 साल पहले अगर ये चीज़ मैं सीख चुकी होती ना तो शायद आज मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होती. कोई ऐसा लेसन जो कि आपने लेट सीखा, इट्स से समथिंग जो मैंने अभी वेरी रिसेंटली सीखा. हमेशा से हिचकिचाहट होती है इंसान के अंदर कि क्या मैं इतनी बड़ी हूँ अपने पोजीशन में कि मैं ऐसे इंसान से बात कर सकती हूँ जो बहुत सीनियर है. एंड आई ऑलवेज बी लाइक अभी नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट कर लूँगी, 3 महीने बाद मेरा ये प्रोजेक्ट का ये अचीवमेंट होगा तो शायद मेरी औकात इतनी होगी कि मैं इस इंसान से बात कर सकती हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. यू कैन गो एंड टॉक टू एनीबडी हाउएवर सीनियर दे आर एंड यू कैन मेक दैट एफर्ट नो मैटर हु यू आर. यू नेवर नो व्हाट विल वर्क. तो मैंने अपने आप से इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मैंने छोड़े हैं क्योंकि मैं डर के मारे नहीं जाती थी लोगों से बात करने. एंड वो अब मैं इनसे मैं बैठ के बात कर रही होती हूँ और उतनी आसानी से बात होती है. एंड आई रियलाइज़ कि मैंने पहले क्यों नहीं किया. इट्स पीपल आर फार मोर वेलकमिंग देन यू थिंक. यू नो, आप सिर्फ जाके पूछ ले एक दफ़ा ना, कोशिश तो करें. से शेक हैंड्स एंड से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अंसारी, आई डू दिस, व्हाट डू यू डू. Shake hands and see where they are, whatever position. मैंने इतने बड़े लोग माशाल्लाह से अभी recently I've gotten in touch with very very senior people and I was surprised at how open they were. Can I let's sit, let's talk, let's see what you have to offer. And I would just immediately in the first meeting be like, you know, this is what I'm doing and this is where I need help. I was surprised that they were willing to immediately offer help too. Oh my God. So कोशिश तो करें. या ये जो आपने पूरा नेटवर्किंग का बताया, इस पे आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी. सो बैक इन 2011 आई वाज इन इस्लामाबाद. सो कामरान रिजवी, Pakistan's legend trainer, he called me up. He says कि I'm going to a conference and I have a keynote session there. I'm sponsoring you for that event, so get ready and I'll pick you. मैंने कहा जी ठीक है. सो रास्ते में कामरान भाई मुझे नेटवर्किंग के रूल्स बता रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम. ही सेड कि सबसे पहले अपना हाथ आगे ही रखो, ठीक है. ये होगा ना विच इज़ लाइक कि आप पहल करें. इवन इस्लाम भी इसको प्रमोट करता है कि सलाम करने में पहल करें. सो ही सेड के हाथ आगे रखो, जाके मिलो, बताओ कि कौन हो और उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बन के बताओ कि आप ये काम करते हो, अगर उनको ज़रूरत है तो दे कैन कनेक्ट यू और ये तुम्हारा नंबर है. सो डोंट गो एंड टेल देम कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, रादर गो एंड टेल देम कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ. एंड दैट completely changed my perception about this networking. And also it was sort of like a master class for me. So like कोई 20-22 साल की उम्र होगी हमारी और आई एम विद कामरान रिजवी, पाकिस्तान लेजेंड ट्रेनर, इवन फाउंडर ऑफ ट्रेनिंग. ये जो ट्रेनिंग मूवमेंट पाकिस्तान में पर्सनल डेवलपमेंट की मूवमेंट है. सो उसमें जो ये वाला लेसन मुझे मिला था, आई कम्प्लीटली कैन अग्री विद यू ऑन दिस पावर ऑफ यू नो गोइंग एंड टेलिंग पीपल और इवन आस्किंग देम कि भाई हाउ आर यू डूइंग. सो दैट टेक्स, वो पहले करे चाहिए, बट वंस यू डू इट, आदत बन जाए तो फिर यू नो इट्स वेरी पावरफुल. Yeah, true. So true. Now, Xenab, coming to the last portion of the show, which is like rapid fire round. और this is all related to जो हम बातें कर रहे हैं, leadership, workplace well-being. I know you will perform very well into it. So, are you ready for this? Yeah. So, जी, the first round is this or that. I know कि context आप ना देखिएगा. You have to only pick this or that. ठीक है जी? Are you ready? Formal diversity training or informal discussions? Informal discussions. Good. Job security or career growth opportunities? Career growth opportunities. Okay. Vision or execution? Execution. Okay, good. यार इस पे I want to hold you. Vision और execution पे I've interviewed, like this is my 11th episode. और vision और execution पे I am looking at the responses. जो मतलब जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूशन का जवाब देंगे, वो विजन का जवाब दे रहे हैं. और
बट वो जिन लोगों ने मुझे एग्जीक्यूशन का जवाब दिया है, आई कैन सी देयर प्रोफाइल एंड इवन लिसनर्स जो कि देख रहे होंगे पॉडकास्ट, तो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं. बट जो एग्जीक्यूशन पिक करें, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस आंसर. या सो अनदर वन, data driven or intuition based decision making? Yeah, this one is a difficult one. I'm for both. Here we go. Data driven, definitely. Okay. Money or passion? Passion. Okay. Leadership or team building? Team building. Okay, good. Resilience or adaptability? Resilience. Good. Diversity and inclusion trainings or diversity and inclusion quota? Quota. Yeah, so it's like कि जी anyhow 30% तो quota है ही है, आपने रखना है. और फिर diversity and inclusion के intervention and programs. Intervention and programs, they're more effective. Results or process? Results. Okay. Physical well-being or psychological well-being? Psychological well-being. Okay, good. Elon Musk or Bill Gates? That's a very interesting one. Elon Musk. Okay, good. Good. Okay, collaborative workspaces or private offices? Collaborative workspaces. Okay, beach or mountain? Because I know कि आपको घूमने का शौक है. Beach, 100%. Okay. I'm a Balochistan lover. I love it. When if you compare the North and Balochistan, I know everybody loves North. I love Makran ka coastal highway. It is the most stunning coastal highway. Yeah. So beach all the way. Wow. And now there is another round which is like favorites. ठीक है जी. Your favorite subject to give trainings? Self-defense. Okay, good. Favorite upcoming project or initiative that you are excited to work on? I have a project with Injaz, Pakistan, and Cinch Network, Pretty Deadly Self-Defense from Germany. Okay. That's coming up, so I'm excited about that. Okay. And favorite TED talk or speaker that you would recommend? कोई ऐसा speaker leadership का जिसको आप suggest करेंगे यार इसको जाके सुने? Oh. It can be a Pakistani or even corporate के से भी कोई हो सकता है. Andrew Huberman. Okay. He is Stanford का professor of neurosciences basically. Okay. और वो brain का breakdown देता है and how to use that and understanding and changing your behavior. Okay, wow. Favorite audience to speak to? Favorite audience to speak to? In what sense? Like you're a trainer and audience है तो कौन सी? For example, youth के साथ काम करने में मजा आता है. हाँ. So, yeah. I love working with the youth. Okay. Yeah, absolutely. Okay. Favorite way to start a day? Favorite way to start a day? Yeah. Stretches. Okay. And breathing. Okay. And finally, ये आखिरी सवाल है इस राउंड का. Favorite social media platform? Nowadays LinkedIn. Okay. I'm not doing as much as you are, but I love it. Okay. Now the final round is fill the sentence. ठीक है जी. The best way to improve workplace culture is? Best way to improve workplace culture is ये rapid fire में नहीं है. Best way to improve workplace culture. That's a huge answer. या कोई एक दो चीजें. Workplace culture को कैसे improve? Media propaganda. Okay. Internal media propaganda. It works. Okay. Yeah. Another one. Effective communication in the workplace can lead to lack of less misunderstandings. Okay, good. The best advice someone ever gave to you was? When you're starting a business and you have no money, start with services. Okay, good. One thing you wish you had known before starting your career was? Is that what people have to say about me does not matter. Wow. The most important quality for a leader is? Empathy. Okay, good. A few more. To create positive change in the world, we must? Synergize. Okay, good. The best way to show appreciation to employees is? One-on-one conversations. Okay, good. And the final one.
the most important factor in successful diversity and inclusion program is? The most important factor, Yeah. sensitivity. Oh, good. Wow, well done. Well played. Amazing. So, Xenab, thank you so much for joining. Honestly speaking, this was very inspiring conversation with you. Or the way you responded to the questions, oh my god, amazing. I'm sure जो लोग ये देखेंगे, they are gonna love it. And thank you so much for sharing these stories, insights, and even your experiences as well. Thank you so much for having me. Had a wonderful time. I think this is something that is going to definitely take off with very big wings, inshallah, like Burak. Inshallah. Inshallah. Thank you. Okay. Thank you.